Hey guys, so today we would be discussing leader-member exchange theory. So this is a very important theory of leadership that you should know, and it is not found in most of the books. So that is the reason I'm discussing here. And yes, I have discussed theory of leadership also and theory of motivation also. Just you can find it over my channel. Okay, now let's start. And yes, so you can follow my Telegram page also. It is with the same name, HR with Sanchita. जो मेरे YouTube channel का नाम है वही मेरे Telegram page का भी नाम है. So now let's discuss leader-member exchange theory. So which is given by Fred Dansrew, George Grain and William Haga. So most of the जगह ज़्यादा जॉर्ज ग्रेन का जिक्र किया गया है लीडर मेंबर एक्सचेंज या LMX theory of leadership से related, but these persons are also associated with this leader member exchange theory, that is William Haga and Fred Dansrew. So let's read the first point. It is also known as LMX or Vertical Dyad Linkage Theory. तो इसे LMX भी कहा जाता है. That means leader member exchange, L for leader, M for member and E for X for exchange. ठीक है, तो वैसे तो exchange की spelling is EXCHANG, but here X is related to exchange. Okay, and yes, it is also called the vertical dyad linkage theory. Now, it explores how leaders and managers develop relationships with team members, and it explains how those relationships can either contribute to growth or hold people back. अब dyad linkage theory, dyad क्या होता है? Two parties are involved in a dyad. That means here leaders and members are involved. ठीक है? Now, अब देखिए, हाँ members होंगे जो काम कर रहे हैं, ठीक है, the workers, and leaders would be the leaders. So the theory states that all relationship between managers and subordinates goes through 3 stages. अब ये theory क्या बोलती है कि जो भी relationship होते हैं manager और subordinates के बीच में वो 3 stages से go through करते हैं. So the first one is role taking. The second one is role making, and the third one is routinization. Role taking, role making and routinization. Again I am just giving you outlook. इसमें क्या है? इसमें basically leader और member के बारे में discuss किया जाएगा, उनके relationship के बारे में discuss किया जाएगा. That is why it is also called the dyad linkage theory. And what it explores, what this theory explores is that how leaders and managers develop relationship with टीम मेंबर्स. ठीक है, तो जो लीडर्स हैं या मैनेजर्स हैं वो अपने टीम मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप कैसे डेवलप करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट वन, दैट इज रोल टेकिंग. रोल टेकिंग में क्या होता है? रोल टेकिंग अकर्स व्हेन टीम मेंबर्स फर्स्ट ज्वाइन द ग्रुप. Managers use this time to assess new members' skills and abilities. अब रोल टेकिंग होता है जब टीम मेंबर्स नए नए ज्वाइन करते हैं एक टीम में, ठीक है, एक ग्रुप में. अब इस रोल टेकिंग में क्या होता है? मैनेजर्स जो होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो जो न्यू मेंबर्स जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके स्किल्स और एबिलिटीज को असेस करते हैं कि इनमें क्या क्या स्किल्स हैं, इनकी क्या क्या एबिलिटीज हैं. ठीक है, सो हियर द लीडर्स असेस the team members who have first joined the group, their abilities, their skills. Okay, so this is role taking. Now let's discuss what is role making. Okay, now new team members then begin to work on projects and tasks as a part of the team. In this stage, managers generally expect that new team members will work hard, be loyal and prove trustworthy as they get used to their new role. अब देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे now the team members have started working on the projects and tasks they have been allotted. ओके, अब मैनेजर्स यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो न्यू टीम मेंबर्स हैं दे शुड वर्क हार्ड, दे शुड बी लॉयल, दे शुड बी ट्रस्टवर्दी, दे शुड बी डिसिप्लिन. ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे रोल मेकिंग में अब द टीम मेंबर्स गेट used to performing their roles. ठीक है, अब उन्हें रोल करना आ जाता है. Okay, and generally now they start performing their projects or they start performing their tasks. Okay, and what do the managers expect or what do the leaders expect? They expect that the new team members should work hard, be loyal and be trustworthy and do work properly. Okay, now the theory says that during this stage managers sort new team members often subconsciously into one of two groups. अब इस स्टेज में ये भी होता है कि मैनेजर्स जो होते हैं ना सॉर्टिंग कर देते हैं. सॉर्ट करना क्या होता है कि जैसे जो न्यू टीम मेंबर्स हैं कुछ आ जाएंगे अच्छे टीम मेंबर्स के अंडर, कुछ आ जाएंगे मैनेजर्स की नजरों में जो अच्छे नहीं है. राइट, ओके, सो subconsciously often
अब ये ऐसा नहीं होता है कि मैनेजर्स को बोला गया है कि आप सॉर्ट करो कौन से अच्छे टीम मेंबर्स हैं, कौन से आपको अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है, ऐसा कहीं बोला नहीं जाता है, बट सबकॉन्शियसली वो मैनेजर और लीडर्स कर देते हैं सॉर्ट, ठीक है, कि हाँ ये वाले अच्छे हैं और ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज रूल मेकिंग। अब जो मैनेजर लीडर्स होते हैं ना, मैनेजर्स और लीडर्स, तो वो क्या करते हैं, वो सबकॉन्शियसली अपने न्यू टीम मेंबर्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज वन इज द इन ग्रुप एंड वन इज द आउट ग्रुप, ठीक है। एक होता है इन ग्रुप, ठीक है, जो सॉर्टिंग की जो मैंने आपको अभी पीछे बताया, एक इन ग्रुप होता है और एक आउट ग्रुप होता है। अब देखो इन ग्रुप में वो कौन से मेंबर्स को रखते हैं, इफ टीम मेंबर्स प्रूव देमसेल्व्स लॉयल, ट्रस्टवर्दी एंड स्किल्ड, दे आर पुट इनटू द इन ग्रुप। Whereas अगर इसका opposite होगा, that they are not loyal, you cannot trust them, they are not skilled, they are not performing well, तो वो leader के out group में चले जाएंगे, okay? So now let's first talk about the in group. If the team members prove themselves loyal, trustworthy and skilled, they are put into the in group. This group is made up of the team members that the manager trusts the most. अब in group में obviously जब loyal, trustworthy और skilled people आ गए हैं, तो that means your manager or leader would trust you the most. Managers give this group most of their attention, providing challenging and interesting work and offering opportunities for additional training and advancement. तो यहाँ पे manager उन लोगों को काफी attention देते हैं, उनको challenging और interesting work देते हैं, and they provide a lot of opportunities for additional training and their advancement to the people who are the part of in group, okay? This group also gets more one-to-one time with the manager. Often people in this group have a similar personality and work ethic to their manager, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैनेजर्स इनको काफी टाइम भी देते हैं वन ओ वन, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसे भी जनरली होते हैं कि जिनकी सिमिलर पर्सनालिटी होती है लीडर्स की तरह, और वर्क एथिक्स भी सिमिलर होते हैं लीडर की तरह, ओके। सो ये कोई बहुत वैसी कंडीशन नहीं है कि होनी चाहिए, बट जनरली दीज ऑल आर द थिंग्स, ठीक है, जो कि इन ग्रुप के मेंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ओके। सो दिस इज द इन ग्रुप। देन मैंने आपको बोला था एक होता है आउट ग्रुप, जो कि इन ग्रुप का ऑपोजिट होता है। तो आउट ग्रुप इज इफ टीम मेंबर्स betray the trust of the manager, that means the manager cannot trust the people who he has subconsciously put in the out group, so that means इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, right? Or if the team members prove that they are unmotivated or incompetent, they are put into the out group. So those people who are not able to win the trust of their managers, and those who are not motivated to perform their work, those who are incompetent and they are not putting any efforts, they are put into the out group, okay? So it's the opposite of in group. So this group's work is often restricted and unchallenging. तो इनको बेटा काफी restricted और unchallenging work मिलता है, ठीक है। Even they do not even get growth opportunities because manager does not offer them, ठीक है, generally because the manager is not preferring them. Manager की या leader की eyes में ये लोग उतना अच्छा नहीं perform कर रहे हैं, they are not able to win the trust of the manager or the leader. So out group members tend to have less access to the manager and often don't receive opportunities for growth or advancement. तो जो out group के members होते हैं, obviously they have less access to the manager and they do not often receive growth opportunities for growth and advancement. So this is the feature of the out group, okay? Now let's discuss this. Ab role taking, role making we have discussed. Now let's discuss routinization, routine. Now let's see what is there in this routinization. During this last phase, routines between team members and their managers are established. अब ये जो last phase है, यहाँ पे क्या होता है? Routinization happens. That means routine between team members and their managers are established. अब देखिए, in-group team members क्या करते हैं? In-group team members work hard to maintain the good opinion of their managers by showing trust, respect, empathy, patience, and persistence. अब if you, for example, if you come in the in-group of your leader, then you would try to maintain that in-group thing, na? You'll if you know that your manager trusts you, your manager likes you, and he or she is giving a lot of growth opportunities for you, then you would seek that ki this should happen in the future also, and always you should be the part of the in-group. So that is why the in-group team members here work hard to maintain the good opinion of their managers. ठीक है, उनकी हमेशा good books में बने रहना चाहते हैं. And how? By showing
trust, by showing respect, by giving empathy, patience and persistence. Okay, now whereas the out group members, अब अगर किसी को पता लग गया that they are a part of the out group of the leader, then what would happen? They would be a little demotivated, yeah, right? So even if you are also a part of out group of your leader, then you would be a little bit demotivated, और आपको फिर वो लीडर अच्छा लगना बंद हो जाएगा और वो टीम अच्छी लगनी बंद हो जाएगी. So now let's see, out group members may start to dislike or distrust their managers. Yes, they would often try to dislike or distrust their managers because it's so hard to move out of the out group once the perception has been established. Out group members may have to change departments or organizations in order to start over. तो भाई out group members जो हैं वो अपने managers को dislike या distrust करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक बार अगर आप किसी के mind में perception बना लो अपना, तो वो change करना थोड़ा मुश्किल होता है. ओके, दो ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाता, बट कई मैक्सिमम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है परसेप्शन चेंज करना किसी से रिलेटेड, राइट? या आपको किसी और की आंखों में अपना परसेप्शन चेंज कराना, दैट बिकम्स रियली टफ. तो जनरली मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, आउट ग्रुप मेंबर्स, वो क्या करते हैं, दे ईदर चेंज देयर डिपार्टमेंट्स और ईदर चेंज देयर ऑर्गेनाइजेशंस टू अगेन स्टार्ट ओवर, एक फ्रेश स्टार्ट के लिए. ओके, so this is what is there in routinization. Now here let's read some more points of this. Once team members have been classified even subconsciously as in group or out group, that classification affects how their managers relate to them and then on, and it can become self-fulfilling. बेटा अब एक बार आप in group और out group में classify हो गए मैनेजर के माइंड में subconsciously, तो फिर obviously managers आपसे उसी हिसाब से बात करेंगे, जैसे in group को थोड़ा फेवर करेंगे, out group को उतना फेवर नहीं करेंगे. Okay, now for instance, in-group team members are often seen as rising stars and the manager trusts them to work and perform at a high level. So yes, in-group के members को आप हमेशा rising stars देखते हैं, right? Often the manager would say that these people are working hard and they have a lot of potential. They are the rising stars of the company, right? So this is also the group that the manager talks to the most, offering support and advice. You know this. Okay, so of course they are more likely to develop in their roles. तो ये लोग develop भी करते हैं अपने roles में because the manager or the leader is preferring them, right? So this also holds true for the out group. The manager spends little, if any, time trying to support and develop this group. They receive few challenging assignments or opportunities for training and advancement, and because they have never tested, they have little chance to change the manager's opinion. तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, आउट ग्रुप में क्या होता है, उनको बहुत ही कम सपोर्ट मिलता है लीडर का. They get less opportunities for training and advancement, और इनको कभी ये ना अपने स्किल्स पोर्ट्रे भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बिकॉज इनको ऑलरेडी आउट ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया गया है. तो दैट इज वाई दे हैव अ वेरी लिटिल चांस to change the manager's opinion. That is why फिर इन आउट ग्रुप वालों को अल्टीमेटली कई बार डिपार्टमेंट चेंज करने पड़ जाते हैं, कंपनीज चेंज करनी पड़ जाती हैं. कई बहुत स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं जो ओपिनियंस चेंज कर भी दें, राइट, बट वैसे लोग बहुत कम होते हैं, राइट. सो दिस इज द लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी. आई होप you've understood it and you can write down the doubts in case you have any.